नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर सौभाग्य आम गहन आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि पूर्त एवं आईन अबकारी विभाग मंत्री माननीय मिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन सर आसी पहुँची गले। टी जोरदार करताली सहित स्वागत करने समस्त को अनुरोध करी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भार्गवे। ओम शांति शांति शांति। स्वास्थ्य ही सफलतार प्रथम पायदान। यही अति सत्य एवं सारगर्भ्य वाक्य सहित मो मुनमुन सिंह आज कार्यक्रम उद्घोषिका एठार उपस्थित आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि दिग्गज व्यक्ति विशेषक चिकित्सक रिसर्चर स्टेक होल्डर्स हु आर रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर एवं अर्गस टीम जनता जनार्दन समस्त को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। शिक्षा अनुसंधान प्रेजेंट्स अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 टिके जोरदार करताली समस्त आशा करी। आज कार्यक्रम आमे चर्चा करवा किछि तथ्य उपरे आलोकपात समस्या विषय कथा हवा समाधान भी खोजिबा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे आमे माने किभली भाव परिवर्तन आनी परिबा सेथिपाई आपण समस्तंकर सहयोग दरकार। आशा करछि आपण माने आम सहित बनी रही। वर्तमान कार्यक्रम को आगे नवा सर्वप्रथमे आमे माने ईश्वरंकर आशीर्वाद लाभ करिबा एवं दीप प्रज्वलन पाई मो अनुरोध करिबी आमर अतिथि माननकु मंच पाखकु आगे आसीबे। जोरदार करताली सहित लेट्स वेलकम मिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ वर्क्स एंड एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, Ms. Aswati S, IAS, Commissioner cum Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Odisha, Dr. Sangamitra Pati, Director, ICMR, RMRC, Bhubaneswar and ADG, ICMR, New Delhi, Mr. Gautam Khanna, CEO, PD, Hinduja Hospital and Medical Research, Mumbai, एवं आमर एडिटर इन चीफ श्री संजय जेना एवं CEO श्री प्रकाश साहू को अनुरोध करी दीप प्रज्वलन रे आम सहित योगदान करेंगे। अनुरोध करी अतिथि मान को निज निज स्थान में बसीजे। ईश्वर आशीर्वाद प्राप्ति पर वर्तमान समय हो जाइए आमे माने समस्ते आम राज्य संगीत पाई छिड़ा ही जिवा। लेट्स राइज फॉर आवर स्टेट एंथम कंसोल। जननी
धन्यवाद समस्त को अनुरोध करी निज निज स्थान में बसीजे 2021 मसीह अर्गस चैनल रो शुभारंभ होता आमे माने के आशा करनथलु कि 3 वर्ष भितर आमे एते बाट आगे आसी पारिबु जदि ताहा संभव होईछि तबे निश्चित भाव में आमको विपुल भाव में जनतांकर समर्थन मिली बहुत प्रतिकूल परिस्थिति रे बहुत चैलेंज को सामना करी निर्भीक सांबादिकता एवं दृढ़ मनोबलर परिचय दे आज अर्गस न्यूज देश रे एक परिचित नाम भाव में आम समस्त पाखे जनाशुना आमे माने सब बेले चेष्टा करिछु जनसाधारण पाखरे पहुँची सर्वसाधारण स्वर हवापाई आपण माने आर्थिक विकास कहतु सरकारी घोटाला कहतु सामाजिक असमानता कहतु न्याय प्रतिकूलता कहतु सबु समस्या गुड़ी को आमे सबु बेले चेष्टा करिछु सरकार को आगरे चिट्ठी खोली देखैबा आमर कार्यक्रम जरिया हो किंबा आमर सांबादिकता जरिया तेबे एई सब को नहीं अर्गस चैनल दिन को दिन प्रगतिर पथरे आगे चली एथरे कोनोसी दोराए नाही आज ए हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 जरिया आमे स्वास्थ्य क्षेत्र में किछि परिवर्तन आनिबा पई प्रयास करिछु खाली हेल्थ कनेक्ट नुहे अर्गस रो बहुत किछि आपण माने कहि परबे प्रोजेक्ट रही बहुत किछि प्रोग्राम रही जहाँ जरिया आमे विभिन्न क्षेत्र में आमर समाज रे जहाँ चिंताधारा रही जनसाधारण को ताकू बदलेबा को चेष्टा करिछु वर्तमान सरकार सपोर्ट मिलुछि सहयोग मिलुछि सेतिपई आमे सफलतार आहुरी प्रगति पथ आहुरी जल्दी आगे पारुछु तेबे आपण समस्त कहवाक चाहिए अर्गस चैनल रो आरंभ रु नहीं आज पर्यंत जय यात्रा आमे माने एक दृश्य चित्र माध्यम आपण मान सामने देखा चाहूँ अनुरोध करेंगे समस्ते स्क्रीन उपर नजर पकांतु। Argus News. The leading and the fastest growing satellite news channel from Odisha has come to be known as a responsible and fearless leader in the world of news. It continues to win the hearts of Odias across the state and the world. निर्भीक सांबादिकता आम संकल्प आमे दो साधारण जनता मौलिक समस्या को गुरुत्व तर्क वितर्क विश्लेषण अर्गस न्यूज टीआरपी रो दौड़रे नुहे With a large Argus family of viewers, Argus stands for conviction, credibility and consistency. As the most technologically advanced news channel in Odisha, Argus is armed with state-of-the-art technology such as real-time 3D graphics, sports analysis and asset management tool. Through virtual reality, teleporting and augmented reality, Argus has opened unlimited possibilities and is creating a new experience. Argus has highly modern newsrooms and studios. The team at Argus is made up of over 200 professionals comprising journalists, reporters, technicians and others. Argus provides news from every corner of Odisha and the world. Argus presents Swad Odisha with Smriti Shri Singh. स्वाद ओडिशा सीजन 2 केवल आपणक पई It has a host of popular programs that are the choice of households across Odisha. It also goes beyond television programming by initiating several conclaves on a wide range of subjects such as education, agriculture, tourism, health, women empowerment and more. It brings together domain experts, influencers, policymakers and industry leaders to discuss and plan the future. Argus is broadcast round the clock on all leading channels. It also has a strong presence in social media and engages a large audience. In the urban 15+ age group, the potential buyers from any family are well connected to Argus. It has a cumulative reach of 14.02% and has the second highest FCT consumption among Odia news channels. Argus News. The curtain has risen,
The journey has begun. आपण को कहबा को चाहिए आमे माने जहाँ आलोकपात करुचु जनसाधारण ओडिशार जनता जहाँ चाहूचंती एवं वर्तमान रो लोकप्रिय सरकार श्री मोहन माझी सरकार जो परिवर्तन पाई अंगीकारबद्ध सबुर स्वर एक आउ आमे ही पारिचु सही माध्यम सेति पाई ओडिशार सर्वसाधारण को अंतररु बहुत बहुत धन्यवाद दबा को चाहिए। तेबे शिक्षा अनुसंधान प्रेजेंट्स अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 2024 जो आमे स्पेसिफिकली फोकस करिछु निर्दिष्टता प्रतिरोध एवं अग्रगति जहाँ सुस्थ जीवनर सठिक पथ आपण माने देखि पारुथिबे प्रिसाइजन प्रिवेंशन एंड प्रोग्रेस द पाथ ऑफ बेटर हेल्थ केयर। एबे जेतेबेले आमे 2021 रे 22 रे प्रथम सीजन आरंभ करथिलु सेतेबेले हमर विषय वस्तु थिला एन्श्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल इन ओडिशा एवं सेकंड सीजन रे अफोर्डेबल एक्सेसिबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर ऊपर आमे चर्चा करथिलु। आपण माने जदी केबे समय पाहांती बा देखिथिबे प्रथम एवं द्वितीय सीजन रे हमर हेल्थ एक्सपर्ट्स माने जे राय देइथिले जेमती 2022 मसिया रे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव निश्चित भाव में फोकस करते कि केरल भली ओडिशा रे मध्य एक वेलनेस सेंटर हवा कथा कहीं ओडिशा रे निश्चित भाव में आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सा को लेकिन बहुत समर्थन रही बहुत बड़ा लैंड अच्छी जोटि आम निश्चित भाव में जरिया किसी एम्प्लॉयमेंट आमे निश्चित भाव में क्रिएट करिपारिबा एवं सेही भली चिकित्सा द्वारा जनसाधारण मध्य उपकृत हो पारे। आउ ए निकट रे आपण मान समस्ते जानते विंझीगढ़ खोर्धा ठारे मोहन सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जो विजन थिला आमे माने सेंटर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा निश्चित भाव में इनाग्रेट करिचु जहाँ निश्चित भाव में एक बड़ सफलता अर्गस चैनल रो प्रयास एभली बहुत किछि आपण माने जानि परिबे जो वैप्लविक परिवर्तन पई हमर टीम सब बेले प्रयास करि आसीछि एवं आगो को मध्य करूथिबो। तेबे वर्तमान समय हेछि आजिर कार्यक्रम मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथि माने आसी आम गहन पहुँची गले आमे मंच उपर को डाकिबा टिके जोरदार करताली हेइ जो फॉर द चीफ गेस्ट ऑफ थर्ड सीजन ऑफ अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट श्री पृथ्वीराज हरिचंदन पूर्त आईन अबकारी विभाग मंत्री ओडिशा सरकार जोरदार करताली एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिव मिस अश्वती एस मो मंच उपर को आमंत्रित करने को चाहिए। निर्देशक आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर एडीजी आईसीएमआर न्यू दिल्ली डॉक्टर संगमित्रापति अनुरोध करेंगे मंचासीन हुंतु। सीईओ पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च मुंबई मिस्टर गौतम खन्ना अनुरोध करेंगे मंच उपर को आसबे। मुख्य संपादक अर्गस श्री संजय जेना मंचासीन हेबे एवं सीईओ अर्गस न्यूज श्री प्रकाश साहू मंचासीन हेबे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर व्यस्तबहुल समय आपण माने समय बाहर करी आज कार्यक्रम अंश हेले से बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान अनुरोध करी आज कार्यक्रम अतिथि देवो भव परंपरा को आगे नवा अनुरोध करी एडिटर इन चीफ श्री संजय जेना मंचासीन अतिथि मानक उत्तरीय एवं फूल तोड़ा दे स्वागत संबर्धना जणाइबे एक विपुल करताली सहित। सर्वप्रथमे कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री पृथ्वीराज हरिचंदन पूर्त आईन अबकारी विभाग मंत्री ओडिशा सरकार आपण को पाई निश्चित भाव में आज आम धन्य अच्छे सर आपणकर प्रेजेंस पाई पार्टिसिपेशन पाई एवं गाइडेंस पाई अंतररु धन्यवाद देबो। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग सचिव मिस अश्वती एस आईएएस निर्देशिका आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर एंड एडीजी आईसीएमआर न्यू दिल्ली डॉक्टर संगमित्रापति। करताली रहीगला आज्ञा ये मुहूर्त बहुत कम मिले जिते बेले एते बड़ विशेषज्ञ माने आम सहित योगदान दियंती एकाथरे। गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल वी हैव विथ अस ऑन स्टेज एंड आल्सो सीईओ पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च मुंबई वी हैव मिस्टर गौतम खन्ना। पुणी थे जनसाधारण सज्जन मंडली व्यक्तिविशेष मान स्वागत जनाऊँ एवं अनुरोध करी आज कार्यक्रम को आगे नवापाई एवं स्वागत अभिभाषण रखापी एडिटर इन चीफ मिस्टर संजय जेना। अर्गस हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 को मंचरे आसीन अतिथि माने
एवं मंच तले थिबा मान्यगण्य अतिथि विभिन्न शिक्षानुष्ठान आसिथिबा छात्र छात्री भुवनेश्वर प्रबुद्ध नागरिक समस्त को ए कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आम मंचरे जो अतिथि माने अछंती आज आम गोटे दिन ओडिशार स्वास्थ्य संपर्कित आलोचना करिबा। आम सहित आम मंचरे जो अतिथि माने अछंती तांकर मार्गदर्शन आमको मिलिबो। आम सहित ओडिशा सरकार प्रमुख मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आम सहित अछंती। ओडिशा जनजीवन सहित सामिल हबार एवं ओडिया लोकंकर आशा आकांक्षा को प्रतिफलित करिबारे तांकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। छात्र जीवनरू सामाजिक कामरे ब्रती हवा सह लोक समस्या सहित जोड़ी होइथिबा जणे व्यक्तित्व श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन ओडिशा सरकार रे आईन वर्क्स एक्साइज रो मंत्री भाव में तांकर दक्षता मध्य से प्रदर्शित करुचंती। आजिर ए कार्यक्रम को श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय को स्वागत करुछि। तांक सहित ओडिशा सरकार रे स्वास्थ्य विभाग रो सचिव आम सहित उपस्थित अछंती। स्वास्थ्य मंत्री ए कार्यक्रम को आसीबार पूर्वरु प्रतिश्रुति देथिले किंतु तांकर विदेश यात्रा पाई से उपस्थित रही पारिले नाही। स्वास्थ्य विभाग ओडिशा सरकार स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि भाव में ओडिशा सरकार स्वास्थ्य विभाग कमिशनर कम सेक्रेटरी आम सहित उपस्थित अछंती। मैडम अश्वती मैडम को उपस्थिति निश्चित भाव में आमर स्वास्थ्य संपर्कित आलोचना को नुआ दिगंत दे पारिबो। तांक सहित आम सहित मैडम डॉक्टर संघमित्रा पति उपस्थित अछंती। गत कोविड समय रे तांकर भूमिका को तांकर काम को एवं लोकों को कम्युनिकेट करिवार शैली को लोकों को प्रशिक्षित करिवार शैली को सारा ओडिशा मर्मे मर्मे अनुभव करिछि। तांकर उपस्थिति निश्चित भाव में ये कार्यक्रम रे स्वास्थ्य कॉन्क्लेव को नुआ दिगंत जोगैबो। ता सहित आम सहित हिंदुजा हॉस्पिटल रो एवं रिसर्च सेंटर रो मिस्टर गौतम खन्ना मध्य उपस्थित अछंती। कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर रे तांकर बड़ योगदान रही। तांकर उपस्थिति निश्चित भाव में आम ए कॉन्क्लेव को नुआ दिगंत दब। समस्त को स्वागत करुच्ची। दुई पद कहिबी आमे केवल खबर देखौथिबा संस्था नुहे आमे ओडिया लोकंक जनभावना को प्रतिफलित करिबा संगठन। आमे खबर व्यवसाय रे नाहु। खबर तो आमर बेउसा किंतु अर्गस पाई लोकमानंकु खबर माध्यम रे प्रशिक्षित करिबा आउ लोकंक जनभावना को लोकंक भावना को प्रतिफलित करिबा ये होउची अर्गस भलिया गणमाध्यमर निष्ठा एवं प्रतिबद्धता। आज जेतेबळे आमे स्वास्थ्य संपर्कित आलोचना करिबा स्वास्थ्य क्षेत्रर ओडिशार बड़ बड़ लोक माने उपस्थित अछंती। ओडिशा सरकार रे प्रमुख मंत्री मध्य एठी उपस्थित अछंती। आमे ग्राउंड जीरो रे लोकंक सहित रहिछु। लोकंकर स्वास्थ्य समस्या कौन आमे आम स्क्रीन रे बारंबार देखौछु एवं लोकंक समस्या को आमे अनुभव करुछु। ओडिशार डिस्पेंसरी ठू नेकी पीएससी सीएससी मानकरे लोक मानकर भरोसा जितिबारे केते सफल हेछि आमर तृणमूल स्तर स्वास्थ्य व्यवस्था रे आम लोक मानकु केते संतुष्ट करि पारिचे निश्चित भाव रे आज दिन रे ये चिंतार विषय आमे कहि परिबा। ओडिशार लोक मानकु कोन देह खराब हेले रेफरल हॉस्पिटल मानकु पठेबार दायित्व आमर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माने दायित्व नैचंती ना सेमाने उपयुक्त चिकित्सा करिकी भल करिबार रेस्पॉन्सिबिलिटी आमर जिला डाक्तरखाना मानकर कांधरे रहिबो ये चिंतार विषय। आज आमर
ଯେତେବେଳେ ଆମେ एससीबी को जाऊे एमकेसीजी को जाऊे भीमसार को जाऊे साधारण लोकंकर स्वास्थ्य अनुष्ठान तो युड़िक एम्स को जाऊे सेठी केतिकी भिड़ रोची ता भिड़ पछर कारण हुए तो आमर जिला स्तर पर्यंत हॉस्पिटल गुड़िक आमर आवश्यकता को मीट करने कौटी ना कौटी सेतिकी मात्रा रे सफल ही नांती आमर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ओडिशा रे लागू होबाकू जाउची आम ओडिशा रो लोक माने बाहर राज्य रे प्रवासी श्रमिक भाव रे काम करूचंती तांकर चिंता ओडिशा पाखरे निश्चित भाव रे रहिबो आउ ओडिशा सरकारंकर स्वास्थ्य भारत सरकारंकर स्वास्थ्य सेवा रे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल माने साधारण लोकंठु भी दूर रे रहिबनी ए सबु समस्या को आमर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मध्य आमे आलोचना करिबा ए कार्यक्रम को आमर अतिथि एवं आमर विभिन्न सत्र रे आसीथिबा जोग देबाकू थिबा आमर वक्ता माने एवं एक कोटिए दिनर कनक्लेव रे जोग देइथिबा समस्त को स्वागत करूची सभा को आगे नेबाकू अनुरोध करूची। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित भाव में आर्गस चैनल आम कहीपर जनसाधारण स्वर भाव में निजर परिचय नहीं पारी तेज आज कार्यक्रम स्पॉन्सर्स मानक मु अंतरु धन्यवाद देवाक चाहिए प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर एंड आपण मैंने करताली सहित धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शिक्षा अनुसंधान एसोसिएट स्पॉन्सर्स सनम संगविनस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर अश्विनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। बर्तमान आपण समस्त को कहबाक चाहिए आज कार्यक्रम में आम तीनोटी पैनल डिस्कशंस रखीचु से पैनल डिस्कशन गुड़िक आम फोकस करूँ अग्रणी स्वास्थ्य सेवार परवर्ती लक्ष्य स्थल भाव में किभली भाव में ओडिशा उभा हो पार संयुक्त सेवा नियुक्ति जीविका निर्वाहर एक उत्स एवं तृतीयटी रही ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना सुस्थ राष्ट्र सुधार। तेबे आपण माने समस्ते प्रोग्राम शेष जाए आम सहित बनी रहिबे से अंतरर आपण समस्त को धन्यवाद करने चाहिए एवं अनुरोध करने चाहिए। वर्तमान समय है आमर सम्मानित अतिथि मानक से अभिभाषण पर आमंत्रित करवा। सर्वप्रथमे अनुरोध करेंगे गौतम खन्ना CEO PD Hinduja Hospital and Medical Research Center Mumbai India। Mr. Gautam Khanna boasts a 33-year career in leadership roles within the business sector. Presently he serves as the CEO PD Hinduja Hospital and Medical Research Center, achieving global recognition in Newsweek World's Best Hospital rankings. Simultaneously he leads Hinduja College of Nursing and participates in the governing council of KPB Hinduja College of Commerce. His previous tenure of 22 years at 3M, a multinational conglomerate, saw him as the executive director and country business leader for 3M healthcare business in South Asia. He is actively engaged in numerous Indian industry associations, including QCL, AOH, Mumbai, Nat Health and FICCI. With multiple accolades and affiliations, Mr. Khanna is an alumnus of IIT Kanpur and IIM Kolkata. सर आम अंतरु धन्यवाद देवु आपण भली जड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज ये मंच आम सहित अच्छा अनुरोध करी आप निजर अभिभाषण रखु। Good morning, and firstly my apologies, I cannot speak in Odia, so I'll try and I'll speak in English and if you want little bit Hindi, but English is what I. So, firstly, Honorable Minister, Mr. Prithviraj Jayachandan, Hari Chandan, Madam Ashwati, Dr. Sangamitra, Mr. Sahu, Mr. Jaina, ladies and gentlemen. Firstly, it's an honor to be invited here from Mumbai to talk about healthcare in Odisha. And I was wondering, why am I invited? Because I am not a local, I don't know what I can help in Odisha, but you know, some wiser minds thought that I may be able to talk a few things. But I just want to say that from what I've been hearing, I commenced my journey in healthcare around 34 years ago. And when we were looking at the healthcare sector, we used to think, someday it will have a great future. And for many decades, I used to think that future is very bright.
But problem was, future was not happening. But I'm happy to say that now that the present is very bright and future is of course brighter. And what we are seeing is the emergence of a healthcare sector in different parts of the country. And I'm happy to say that whatever I've been reading about Odisha is on the upward path. So there is a lot of good news coming from Odisha now for healthcare also. But just for perspective, for some people who may not know the statistics, how big is the healthcare sector? So healthcare sector in the country is between 3 to 4 lakh crores per year, and which includes hospitals and device manufacturers, etc., which is expected to become 10 lakh crores in 5 to 7 years. That means that if we just keep doing the right thing, we will double and maybe 2.5 times as a country. Now, the big thing is the growth of metro versus non-metro. So, metros are growing at around 9 to 10%, while the tier 1 cities like Bhubaneswar, etc., are growing at 12 to 14%. And what that means is that there is more growth coming from non-metros than coming from metros. So there is an opportunity here. Why is there an opportunity here? One, of course, we all know that, income levels and middle class is increasing, and a lot of people in non-metros are now getting wealthier. And the problem of, when we say the problem of there is too much traffic, there is no place in the hotel, there is no flight tickets, all that is an indicator that the economy is doing well and healthcare will do well, because everyone will need healthcare. But just to come back to the healthcare sector, there are 3 problems in healthcare. One is you need to provide access to healthcare, that somebody should be able to reach a hospital or a health center. Second is affordability. They should be able to afford what is being offered there. And third, that it should be available, that even if you are willing to give a physical infrastructure, where even if it is affordable, there should be somebody like a doctor or a nurse to make the healthcare available to the person. So these are the 3 main things. Of course, there are much more, but these are the 3 main things. So now if you think of the access, with the latest initiatives going on about primary health center rejuvenation in the country and in Odisha, my suggestion to the government through you, sir, is that in COVID time, we saw that the government and private worked together. And because we worked together, we were able to defeat this menace. Now, healthcare, the problems of India as a healthcare and as the state cannot be managed either by private or by government alone, we have seen. So if we can look at more and more models where they can work together. So for example, if the primary healthcare and the secondary healthcare is provided in some PPP with the government, by private, and quaternary care in town. So we make a continuum that's saying that this will be private, this will be public, but it is all one integrated healthcare. Madam, you are aware of this. The other key thing about this is, one is of course physical infrastructure. Now physical infrastructure, all of you probably are aware that to set up a hospital is a very, very high capex intensive business. In a metro or in a Bhubaneswar kind of a place, if you want to set up a super specialty hospital, it will be at least 1 crore per bed, plus land. So that means it is not going to be easy to set up a large hospital. Even if you set up a hospital, you need a doctor and you need nurses, and there is a lot of shortage of doctors and nurses. So one of the suggestions which I have offered is that there should be some kind of a program, and I am requesting you, madam and sir, to see, ghar vapsi to Odisha. I don't know if you can use that word, that people who have migrated out of the state and working in US, UK, Bombay, wherever, but they want to come back,
let them come back and provide the healthcare here. So doctors and nurses. And of course, nursing education. So there is talent is important, technology is important for which investment is important, and infrastructure. The other key thing which we understand is that when we have the talent, you know, many of you here are trying to recruit people. And I can tell you that there are many people who don't have jobs and who have the application for the jobs. But when you start to recruit, you don't find anybody suitable. At least that's my experience. Very few people. That means they are educated, but they don't have the skills to be employable. So when we are talking about talent, nurses, allied health, we need to focus a lot on the skills. So as a state, if we can enhance the skill levels of the allied health professionals and the nurses, that will be a good boost to the sector. There is one thing which I want to add. You know, I'm going to say it openly because people hide it and say it behind my back and everybody. They say healthcare, we don't trust as a patient. As a friend, they will, but as a patient, they don't. And the reason for that is that everybody wants healthcare cheap. Now, the problem is, this is my view, that a human body in USA is the same as India. So why a treatment which is available to a patient in your hometown Germany should not be available in Odisha, should not be available in Calcutta, should not be available in Sambalpur, for example. So that means if you use the same equipment, the cost is going to be there. You cannot make it free. Somebody has to pay for it. So my request is that with the scheme of the insurance scheme which you have done so nicely, that the affordability, the ability to pay has to be enhanced. Because you cannot say that 1.5 Tesla MRI I will not use, I'm going to use a 0.3 Tesla. That is not possible. So you have to buy 1.5 Tesla, but whatever is the cost, you should have the affordability and to pay. So this leads to the second question, which is the trust and ethics. The success of any healthcare system, whether in a state or in a private setup or in a government setup, depends on the trust of the community with the doctor and the hospital. And many doctors are here, and they will vouch for it, that the trust comes from only two things. Very simple thing I say. Do what you say and say what you do. Don't do anything else. That's all. But problem is, we will say something because we want to attract the patients, but when the patient is inside the hospital, I will give him something else. That is the problem. So I think the transparency and credibility in the private sector, because government I don't think there is a concern, but in private sector, it should be a mandate that you should be transparent and ethical. Just publish what you say. I mean, in a city, you have a Taj hotel and you have a dhaba. So it doesn't matter, but you should still tell what you will do. And one more thing, and I saw Dr. Sangamitra here. The reason healthcare systems succeed, key things which is hidden, is the focus on education and focus on research. So if we can invest in research and education, what happens is the clinical outcomes become better. Because of the teaching, our clinicians become better. So the overall system moves up. So that I think should be I think I'm requesting you to push that here. And I just want to say that I know that now I don't know whether it is going to be 1 decade or 2 decades or 5 years, I don't know, when Odisha will really become a super developed state with the adequate healthcare. But I think the journey has started, and I'm happy to
contribute in any wisdom or experience which I have, but wishing all of you a great conference and learning from this meeting today. Thank you so much. Thank you so much, sir. अपन माने समस्या सन को सुनिले सर एम्फेसिस देले तीनोटी मुख्य समस्या उपरे जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र रे समस्त उपरे प्रभाव सृष्टि करिछि प्रभावित करूछि एंड किभली भाबरे विज्ञान कौशल एवं टेक्नोलोजी निहाती भाबरे आवश्यक ता सहित इन्वेस्टमेंट एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन इनएविटेबल विंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेस आगो को जिबा वर्तमान अनुरोध करबी आम गहन रे अछंती आमर गेस्ट ऑफ ऑनर Dr. Sanghamitra Pati, Nideshika, ICMR, RMRC, Bhubaneswar, and ADG, ICMR, New Delhi, would like to take you through her short profile. A physician turned laboratory scientist and public health researcher, Dr. Sanghamitra Pati is currently working as the Director, ICMR, Regional Medical Research Center, Bhubaneswar, and took over additional charge of additional DG, ICMR, New Delhi from 2nd February 2024. Needless to mention the crucial role played by Dr. Pati, I would definitely emphasize that she was also instrumental in co-developing the first make in Odisha rapid antigen kit for COVID-19 diagnosis. You deserve a thundering round of applause, ma'am. A distinguished law scholar at Harvard School of Public Health, Boston, with research experience of 25 long years, she has co-authored 300 plus scientific publications in the peer-reviewed journals and co-authored 2 books on healthcare and a few book chapters. She has an index of 45 and I-10 index of 164. Ladies and gentlemen, she has bagged many awards. The recent one I would be definitely naming. This is from Odisha CSR Forum 2024 and the award was Chief Minister's Award for Excellence in Healthcare Services, Government of Odisha 2024. Other than that, Biswamukti Rashtriya Swasthya Seva Samman 2023, Odisha Women Award 2023, Devi Award 2020, Times Power Women Award, Madhubabu Odisha Gaurav Samman Award, and so many awards are there. And of course, she is a Fellow of National Academy of Medical Sciences, India, and Fellow of Royal Society of Public Health, UK, UICC. Ladies and gentlemen, give a thundering round of applause. Let's welcome Dr. Sanghamitra Pati. Ma'am. First of all, thank you for a very generous and magnanimous introduction. Namaskar. Honorable Minister, Law, Works and Excise, Government of Odisha, Sri Prithviraj Harichandanji, Commissioner cum Secretary Health Ashwati Madam, Dr. Gautam Khanna from Hinduja Hospital, also 2 colleagues from Argus whom I know already, Jena sir, namaskar, and Sau sir, namaskar. And all the distinguished delegates comprising, I can see, a spectrum and an array of different disciplines, and that is what health is all about. Health is something, health care is something, and health service delivery is never a single person. No physician, no doctor, or no nurse, no one can claim that it is because of me a patient got well. Because health service delivery is all about teamwork. As we can see in the award ceremony, we have different strata health service provider being rewarded and awarded because health is nothing about collective and collaborative teamwork. Namaskar, apan aji award pauchanti. Congratulations. In fact, I can also see the future generation ambassadors of health, all the young students and all the policymakers, citizens who are aware and activated to participate and contribute to the betterment of health. I also saw people from insurance sector. You have a very strong role with our Ayushman Bharat scheme because without insurance, health financing and out-of-pocket expenditure can be catastrophic and really can disempower a person of his livelihood and lifelong income as well. And most important stakeholder of health who is organizing this event, Argus, and all the media fraternity. Huge congratulations. I think they deserve a big round of applause for the cause of health. Very rarely, maybe 2 decades back,
we never came across media being a proponent of healthcare, media advocating that every citizen of India, every citizen of our state needs affordable, available, accessible, most importantly, equitable healthcare. So they are the champions. And the most important role which I came across, especially of Argus and other media, when the COVID-19 pandemic struck. No one was more alert, apart from government, apart from researcher, apart from health service providers, apart from police. आउ जने सतर्क प्रहरी थिले से होचंती मीडिया कोठी छोटो केस हेले भी मते फोन करथिले एठी गोटे केस आपण जानिचंती many times they were knowing the outbreaks before we came to know. So we call them that they are the early alert. They are the field epidemiologists in today's day, because no one knows any information quicker than them. Why? Because they have that relationship with community. They have that trust with the community wherein they can get that first-hand information. And not only, sir, all sincere request is that the way you have been involved proactively, making every citizen about their health needs, about their health entitlements, please also make that how each citizen is activated. Because what we see is that in terms of, for example, diabetes medication, many a times we see a person starts the medicine, but after a certain time, they fail to adhere, or medication adherence or treatment adherence is a big issue or a huge issue in healthcare, because already a lot have been told about healthcare delivery. I won't repeat that what are the needs or nuts and bolts of an efficient and successful healthcare. But most importantly, I feel patient is the most important stakeholder for any healthcare delivery or any healthcare to be effective. Why? First of all is that a person has to be very much involved about self-care. All the time we discuss about services being provided to a patient, but at the same time, a patient also has to equally participate in his or her health. So my request to, or humble submission to all my media fraternity is that how can we make each person aware about their health, also empowered about their health, and at the same time give them that competence or that kind of skills so that they are able to manage their small illnesses, minor illnesses on their own. So when we look at health service delivery pyramid, if you see that 60 to 70% of our minor illnesses can be managed by self-care. Not necessarily for each problem we have to come to the facility. And therein, as told by very nicely Gautam Khanna ji, we require this point-of-care diagnostics. Did any one of us know how to measure our oxygen saturation before COVID? No. COVID pandemic taught us that we can monitor our own oxygen saturation. Did any one of us know what is the city value? I have heard many questions from many people from rural area also asking, what is my city value? My COVID test is positive, what is my city value? That shows the patient empowerment through information, and herein the media played a very, very critical role. I will next, above the self-care, the second most pillar for a robust health service delivery is strengthening primary health care. There cannot be any substitute, any alternative to a strong primary health care, because 90% of our problem, and 90% of our problem of 90% of our patient can be tackled at primary health care. So strengthening the primary health care, most importantly now that we are having health and wellness center or Arogya Mandirs, the role is that not only prevent illness, but also promote wellness. So these two, prevention and health promotion, both are equally important and complement each other so that a person doesn't have to move to secondary care or tertiary care. So these two, self-care and primary health care, if they are focused on, I think the footfall or the load on the secondary and tertiary care are going to be reduced, and they can devote their time, their energy to the cases to which they should ideally do. Many a times we see tertiary hospitals are becoming primary healthcare center. They are seeing some routine illnesses for which they should not do, because they can be easily taken care of at a primary healthcare center, which not only reduces the burden on the hospital, but also on the patient.
A patient has to move from PSC to a sub-division hospital, from sub-division hospital to a medical college for a problem which could have been easily solved at a PSC. I am just giving you an example of one research study I did, which shows the whole nitty-gritties of a health service delivery. Long back, I did a study with a cancer hospital to find out the time taken between the first appearance of symptom, cancer जो भी गोटे symptom, pain hela, ba bhuko helani, ba kuch non-healing ulcer, the first appearance of a symptom and the final diagnosis and treatment initiation. These are the 3 points, critical milestone in cancer care trajectory. So what we found when we interviewed around 343 individuals who were diagnosed with cancer, we found that the median time interval between the appearance of symptom, aji jodi problem hela, tar diagnosis hela, mean time is 263 days. Can you imagine the time taken for the appearance to the diagnosis? While we are saying cancer survival is 5 years, losing 260 days in just diagnosis is something we really have to look at. Of course, it is I'm saying something which is 12 years back. Then after that, being diagnosed and starting the treatment, it took another 111 days. Why? Because they had to arrange their finance, they had to find out some escort who will go and stay there for chemo. But now, these things have been started to be getting solved. We are having day care chemotherapy for which a patient doesn't have to come and stay. We have delegated the detection of cancer into district hospitals. So what I'm saying is that things are definitely progressing. The way the theme of today's Health Connect is precision, prevention, and progress. We are progressing definitely, and I'm sure with the support of media and with all the citizens who are here, who are committed for making Odisha not only a robust health service provider state, but also as a medical destination for many other states, I'm sure we all together can do it. And so not only so the India, but also to the world that Odisha can do it. I'm sure with all of you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Definitely with right dynamics and equation, every teamwork can become a dream work. Beautiful, beautiful words. Moving ahead, it's a matter of sheer pride and pleasure that we have with us today none other than Commissioner cum Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Odisha, Ms. Aswati S. Ladies and gentlemen, she is an economist by education and a career bureaucrat by training and profession. Ma'am's long 21 years of leadership experience in the Indian administrative services has helped her to have considerable expertise in public administration and governance, especially in the field of public health, nutrition, gender, child rights, and education. She is a Master's in Public Policy from the University of Oxford with Order of Merit and third rank holder and topper among women in the country in the National Civil Services. Ma'am, a matter of sheer pride again. University topper in MPhil degree and stood among the top 5% master's students in the country in the NET test, as all of you are aware about the same. College toppers in master's degree, lot many accolades. If I talk about her career and education, as a member of the faculty and master trainer at the Lal Bahadur Sastri National Academy of Administration, she has set so many trends. I would definitely like to mention that in Odisha, she has served in various capacities. Let it be district magistrate of various districts, director of social welfare, secretary, school and mass education, and health and family welfare. Ma'am, we are delighted to have you, and we all are waiting for your kind words. ठीक है, जोरदार करताली सहित मैम को स्वागत करियो. आदरणीय चीफ गेस्ट, मंत्री महोदय श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन जी, मिस्टर गौतम खन्ना, डॉक्टर संघमित्रा पति, मिस्टर जैना, मिस्टर साहू, आपण माने समस्तों को मोर विनम्र नमस्कार. So I'm very, very happy to be here.
First of all, let me also thank the organizers for inviting me. In fact, what happens is that in our daily lives, when we are dealing with administrative issues, when all of you in the media are trying to deal with the breaking news, sometimes I think it is important that we get together in a single room. Otherwise, we get caught up in too many smaller events and firefighting that we don't plan ahead. Therefore, I think it is important that we get together in a single room to highlight things that are important for Odisha, important for health in Odisha. So once again, thank you so much for having me here. And when I speak about planning for the future, how long one should plan for Odisha? Should it be 1 year, 2 years? In fact, for a sector like health, where I would echo the sentiments highlighted by Mr. Khanna, that Odisha has made tremendous progress in health sector. However, we still have miles to go. And how do we get there? And what should we do to get there? Now, recently, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत. विकसित ओडिशा in 2036 for Viksit Bharat in 2047. Yes, we are planning to have a vision for the next 2 decades. Now, if we have to plan for the next 2 decades, and since all of you are here who are experts in your own fields, what are the few things that one should keep in mind when we plan for health sector in Odisha for in 2036 and 2047? What are those key trends that one should have a focus on? Number one is that there is a demographic transition towards aging population. This is happening across the world, not just in our country. It is happening across different states in our country, and it is happening in Odisha. In fact, in Odisha, the proportion of elderly population, which is 60 plus, is expected to grow from 9.3%, which was there at the time of the last census, to 18.1%, which is almost double by 2036. So what does it mean in terms of health sector and healthcare provision? Is it about geriatric care? Is it about ensuring that our elderly population remain productive? So there are a lot of other issues that comes into play when we have this as a key trend. A second trend, the triple burden of disease, where we have communicable disease, where you have non-communicable and injuries. And we've also seen how this non-communicable disease is increasing in states like Odisha, which I'm sure is concerned for experts like Dr. Pati as well. Next key trend for us would be the threat of climate change and extreme climate events, which we have been seeing in our state. I had first come to Odisha in the year 2004 as a trainee. Jetavale ame asithilu as a fresh trainee, what we could hear was all about the super cyclone. And my first experience with a cyclone of that magnitude was sometime in 2013 with Phylin. So it took almost 15-year gap, 14-year gap. But from that Phylin till today, another 14-year gap, we have seen multiple cyclones. So these kind of events are becoming more regular. This year, again, I'm happy to see that one of our
torch bearers of our department, our frontline workers, Mrs. Shibani Mandal and Manas Malik are here, who have done exemplary work in the recent Dana. But the fact is that these events are becoming regular. So how do we incorporate this climate change in our policy and our planning? Next key trend would be the threat of frequent emerging and re-emerging infectious diseases, including pandemics. We have seen COVID. And in between, we have heard about so many other infectious diseases like monkeypox in recent times. Now, it seems like something happening in a far away corner of the world suddenly is becoming important for everybody. So how do we plan for that? How do we take into account the fact that it is a much more globalized world? It's a much more interconnected world. How do we protect ourselves from these infectious and diseases and pandemics? Next big trend is going to be the emergence of digital technology, especially AI/ML. How can we make use of these facilities? In fact, today there was a publication on how this can be used for detecting fraud in medical medicine and medical delivery of health services. So how do we make use of this big data and AI/ML for health service delivery? And finally, I would like to highlight the big trend of urbanization and changing and evolving social structure. In fact, the data says that by 2047, India's urbanization rate is likely to grow by 51%. What does it mean? It means clustering of population in urban area. It means lot of migrant population. It means difficult to track and trace spread of sometimes diseases. It also means that with urbanization comes change in societal structure and maybe perhaps even increased mental health issues. So how do we plan for that? So see, these are some of the key trends that experts have identified will be very, very relevant for us to understand and incorporate while we make the policy. So I hope that these key trends will be kept at the center when we have deliberations in the subsequent panel discussions here today. Before we end, let me also compliment the organizers that you have organized the program as Health Connect and not as Healthcare Connect. Because I think the direction in which government of Odisha would like to take the sector forward is to have the broader health sector in mind rather than just the healthcare part of it. That is the reason why we have recently, our Honorable Prime Minister had laid the foundation stone of the Central Institute of Yoga and Naturopathy at Jetni. That is the reason why we'll soon be having another institute for Ayurveda in our state. That's the reason why, as Dr. Pati had mentioned, why we should have the wellness centers across the state providing preventive and wellness-related services to the larger public. So therefore, and I think since you have precision, prevention, and progress, the path to better health will be in the focus in the subsequent deliberations. Once again, let me thank all of you for having me here and for being a patient audience. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Sustainable practices as very much required. 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା 2036ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଜବୁତ ହେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଲୋକପାତ କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆମେ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ
डाकिबा पोडियम पाखक शुणा सर मतामत जी निजर व्यस्तबहुल समय किसी समय बाहर करी आज कार्यक्रम आमर मुख्य अतिथि भाव में आसी पूर्त आईन अबकारी विभाग मंत्री श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन सर मु कहवाक चाहिए पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय प्रयास जो आमे कहीपर ओडिशा रे आईन कानून सुधारिबा नया प्रणाली सुदृढ़ करबा एवं सरकारी विधान सृष्टि करिबारे से मुख्य भूमिका निभाइछन्ति। He is a prominent political leader and a senior member of BJP in Odisha. He is currently serving as the Minister of Law, Justice and Legislative Affairs in the Odisha government. Sri Harichandan has been a dedicated public servant and a strong advocate for legal reforms and justice in the state. Born and raised in Odisha, he has been active in the political arena for several decades, earning respect for his leadership, integrity and commitment to the welfare of the people. He has held various important positions in the state government and has been instrumental in shaping legislative policies aimed at the development of the state. As the Minister of Law, Justice and Legislative Affairs, he plays a crucial role in overseeing legal matters, ensuring the fair implementation of laws and contributing to the legislative framework of Odisha. His contributions have been focused on improving access to justice, enhancing legal education, and strengthening the governance structures in the state. Under his leadership, there have been tremendous changes, impactful initiatives which are aimed at improving transparency in governance and strengthening the legal and judicial systems in our state, Odisha. Sri Harichandan's work continues to have a significant impact on both the political and legal landscape of our state, Odisha. With a big round of applause, let's welcome our Chief Guest, Honorable Minister, Law, Works and Excise, Government of Odisha, Sri Prithviraj Harichandan, sir. आज तृतीय वर्ष रे अर्गस टीवी रो ये जो महान प्रयास ओडिशा हेल्थ कनेक्ट माध्यम रे निजर नित्य नैमित्तिक कामरू बाहरी की ओडिशार हेल्थ सर्विस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रो एक नुआ दिगंत केमिति सृष्टि हब से लक्ष्य से स्वप्न नहीं कि ओडिशा हेल्थ कनेक्ट जो कार्यक्रम अनुष्ठित होती एवं विशेष करी कि जेतेबेले अर्गस टीवी रो चीफ एडिटर संजय जेना तंकर वक्तव्य दौथिले सेतेबेले मते लागिला जे केवल ओडिशार हेल्थ सर्विस नुहे संपूर्ण ओडिशा को एक हेल्थ सेक्टर डेस्टिनेशन पॉइंट भाव में प्रतिष्ठित करने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आवश्यकता अच्छी ताकू आखि आगे रखिकी वर्ष पर वर्ष 3 वर्ष एटा तृतीय वर्ष रे से पदार्पण कर प्रयास को जारी रखिए बोली जो से सूचना भी देइचंती मु भावुची निश्चित भाव में भगवान करिवे से सुफल मिलू एवं भगवान का आशीर्वाद भी अर्गस टीवी उपर सब बेल थाउ। मंच उपर उपस्थित डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रो कमिश्नर कम सेक्रेटरी मिस अश्वती एस, हिंदुजा हॉस्पिटल रो सीईओ मिस्टर खन्ना एवं आईसीएमआर आरएमआरसी रो डायरेक्टर डॉक्टर संघमित्रा पति व्यक्तिगत भाव में डॉक्टर संघमित्रा पति पाखे मु कृतज्ञ एवं ऋणी तार कारण होची जेतेबेले कोविड इन्फेक्शन होतला मु आउ किछि राजनैतिक बंधु आमर गोटे प्रमुख काम थिला जो जिल्ला रे हो जो जगार हो जो माने कोविड इन्फेक्शन रो शिकार होबा आरंभ करुथिले किछि सिम्पटम्स जना पडुथिला सेमानंकर तुरंत तांकर
टेस्टिंग करेबार जो प्रक्रिया से टेस्टिंग करेबार प्रक्रिया कला परे तांकु किए हॉस्पिटल एडमिट होवार आवश्यकता थिला कि आइसोलेशन रे घरे रहिबार आवश्यकता थिला से कथा पई तांकु पुनी डॉक्टर संगे जोड़िबा ये प्रक्रिया करिवा भितरे पाखापाखि 5000 रु ऊर्ध्व पेसेंट को सेते बेले आमे अंतत तांकु कोविड हेइची कि नाही जानिबार सुजोग पाइलु सेथिरे अनेक बार डॉक्टर संघमित्रा पतिंग सहित तांकर साहाय्य आमे नेइचु एवं आज आउ जणे व्यक्ति आम भितरे नाहांती से भली डॉक्टर अजय परिडा स्वर्गत डॉक्टर अजय परिडा जे कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस रे डायरेक्टर थिले तांकर भी समान भाव आम से भली भाव सहायता सहयोग नैतिलु से दृष्टिकोण रु से सहायता पाई मु व्यक्तिगत भाव में आज तारीख रे भी डॉक्टर संघमित्रा पति पाखे कृतज्ञता मोर सब बेले अर्पण करे। मुख्य संपादक भाई संजय जेना, श्रीजुक्त प्रकाश साहू एवं एठारे उपस्थित समस्त अतिथि माने एवं ए कनक्लेव रे जोग देबाक आस्थिबा समस्त डिग्निटरीज माने भाई भौणी माने वास्तव रे आज जेते बेले स्वास्थ्य समस्या कथा कहूचे ओडिशा प्रदेश रो विभिन्न अंचल विशेष करिक ग्रामांचल कथा जदि देखिबा तीनोटी मुख्य रोग रे आम सामना रे जो कथा आसूची तीनोटी मुख्य रोग आम समस्त आखि आगे देखा मिलूँ। गोटे हूँ हाइपरटेंशन रिलेटेड रोग उच्च रक्तचाप जनित रोग, द्वितीयटी हूँ मधुमेह जनित रोग एवं तृतीयटी हूँ कैंसर। प्रायतः ग्रामांचल जोठी स्वास्थ्य सचेतनतार भी कम अच्छी सहर रे हेले पाखे डाक्तरखाना अच्छी आम जाऊे परीक्षा करदे डाक्तर को कंसल्ट करिवार सुजोग मिलूची किंतु प्रायतः ग्रामांचल एवं विशेषकर गरीब परिवार मानक भितरे सचेतनतार एक अभाव परिलक्षित होतिबा कारणरू ये तीनोटी रोग अनेक समय महामारी रूप नौछि। गाँ गहली रे कहीं ब्लड प्रेशर चेक करती नहीं, जेते कहले भी गोटे निर्दिष्ट बयस पर 40 वर्ष पर 50 वर्ष पर गोटे नियमित इंटरवाल ले ब्लड प्रेशर चेक कर दिंतु। पाखे पीएचसी अच्छी अलग कौन भी हॉस्पिटल अच्छी पारामेडिक स्टाफ किए अच्छा ब्लड प्रेशर चेक कर आवश्यकता अच्छी कहले भी लोक से कथा को शुणती नहीं। एवं विशेष करिकी गत किछि दिन पर कोविड रो इन्फेक्शन पर जो कथा आज देखा मिलूँ जे अनेक जगार साधारण भाव में गोटे बयस पर हाइपर टेंशन कारण अनेक लोक ब्रेन स्ट्रोक रो शिकार होगी गाँ गहली रे घरे पड़ी रही भितर किछि लोक जहाँ सुजोग मिलूँ से चिकित्सित होगापाई, किछि लोक निज कर्म को आदरिक भगवान को आश्रा रे पड़ी भी रही। कार्डियाक स्ट्रोक जोटा कि गोटे काँ भाँ केतेबेले केमती आगुरी होतला एबे कार्डियाक स्ट्रोक रे मृत्युवरण करुवा लोकंकर संख्या भी गाँ गहली रे धीरे धीरे बढ़िबार लगी। कोविड इन्फेक्शन रो इम्पैक्ट हुए तो हो पारे, डॉक्टर पति से बाबद रे हमको अधिक ज्ञान दे पारिबे, किंतु से कारणरू हमको बेले बेले ये सबूर इराडिकेशन प्रोसेस को केमिति जीवा से बाबद रे भी आम समस्त भितर सचेतनता केवल नुह तार सबू दिग को देखिबार प्रक्रिया आरंभ करिवार आवश्यकता अछि। डायबिटीज जोटा आज तारीख रे गोटे एज ग्रुप पर गोटे कॉमन डिजीज हवा आरंभ करछि। डायबिटीज कारणरू साधारण भाव रे किडनी फेल्योर मालफंक्शनिंग ऑफ किडनी ये गोटे पूरापूरी भाव में निर्दिष्ट भाव में ग्रामांचल रे एक ग्रास करने आरंभ करछि अनेक लोक एवं कहार डाक्तर एडवाइस क्रमे क्या सप्ताह रे थरे क्या 2 थर क्या 3 थर डायलिसिस होगापाई स्थिति को आसुछन। एटा निश्चित भाव में गोटे डिफिकल्ट टास्क गोटे गरीब लोक आसीबो से पाख सहर को आसू कि डीएचएच पर्यंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर्यंत जाऊ तापाई निश्चित भाव में गोटे खर्च करिवार जो प्रक्रिया
सप्ताह को 3 दिन सी जिते आसो ता गोटे सप्ताह तार पाखापाखि 8 ରୁ 10 हजार टका खर्च हम जीवा आसवा जहाँ भी कले भी 8 ରୁ 10 हजार टका खर्च हो। तो अनेक लोक देखिले भी कष्ट लगे देह हाथ फुली जाइथिबो विभिन्न कारणरू ए जो किडनी मालफंक्शनिंग कारणरू एवं से घरे किंतु पड़िथिबे कहबे पैसा नहीं जाई परुनी कार्ड रे ट्रीटमेंट करिया को पैसा तांको होय तो सुविधा मिली परिबो किंतु परवर्ती जो जीवा आसीबा रहिबा खर्च ए सब खर्च के दबो तांको ये जो प्रक्रिया एथरु भी कोठना कोठी हमकु बाहर को बाहर आवश्यकता अच्छी किडनी मालफंक्शनिंग रो जो प्रक्रिया से अनेक लोक कार किडनी फेलियर होती कार विभिन्न पारामीटर खराब आसची सब कथार आमको बाहर आवश्यकता अच्छी एवं आउ गोटे बड़ रोग हूँ कैंसर जो थे कि अवेयरनेस अभाव जो कथा एबे आमर स्वास्थ्य विभाग सेक्रेटरी निजे कहते अवेयरनेस अभाव अनेक समय आमे विभिन्न सिम्पटम्स आसिले भी आमे जानिबा संभव हो नहीं एवं ताकू सप्रेस करके निज भितर रखिकी आमे से रोग को बढ़ेवा को सुजोग दौचु स्टेज 3 स्टेज 4 रे जेते बेले जना पड़ुची सेते बेले से लोकर बंचिबार आशा सबुजाक मौली जाउची कोठना कोठी तेणुकर ये सब कथा को जदि आखि आगे रखी करबा केवल फैसिलिटी एक्सटेंशन करदेले खाली हब नहीं हेल्थ अवेयरनेस गोटे बड़ कथा अच्छी जो कथा को लेकिन आम आगू को जीवा पड़ो हॉस्पिटल मानकरे जो भली भाव सीएचसी मानकरे जो स्ट्रेंथ बिल्डअप करने कथा ताकू एबे सरकार से प्रक्रिया आरंभ कर पाखापाखि 120 रु ऊर्ध्व यही 4 मास भितर 120 रु ऊर्ध्व स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकार विभिन्न जगह अपॉइंटमेंट कर प्रक्रिया आरंभ कर खूब शीघ्र पाखापाखि 5000 डाक्तर निजुक्ति भी सरकार से प्रक्रिया आरंभ कर अंततः घर पाखे डाक्तर अवेलेबल थिले जड़े पेसेंट ता मनरे दंभ आसीबो दृढ़ता आसीबो सी तार विश्वास आसीबो जे सी जीव एवं जो कथा आम डायग्नोसिस एंड इराडिकेशन कथा कहूचे से प्रक्रिया को सी आदरी पारिबो ये भलिया एक स्थिति को जाई पारिबो आमे से कथाटा को गोटे प्रायोरिटी दवा आरंभ करछे एवं आउ गोटे बड़ कथा आमे जेतेबेले विकसित ओडिशा 2036 कथा कहूचे पॉपुलेशन इंडेक्स रो जो फोरकास्ट अच्छी समग्र देश एवं ओडिशा रे भी वयस्क मानकर संख्या 2036 रे युवक मानक अपेक्षा अधिका रहिबो 2036 मसीहार जो आकलन अच्छी से फोरकास्ट कहूँ जे वयस्क मानक संख्या बढ़िबो किंतु विशेष करके जदि से दृष्टिकोण देखा एटा मोर हुए तो व्यक्तिगत मत हो पारे 2036 मसीहा बेलू को जेरियाट्रिक केयर आम गोटे बड़ चैलेंज होगी रहिबो जेरियाट्रिक केयर विथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आम गोटे बड़ चैलेंज होगी रहिबो से पल्मोनारी हो से रूमाटोलॉजी ट्रीटमेंट हो से ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट हो न्यूरोलॉजी रे हो जेकोसी कथा विभिन्न विभाग को सम्मिलित करिकी जेरियाट्रिक ट्रीटमेंट एवं तांकु जेरियाट्रिक जो वयस्क लोक मानकु तांकु कोभलिया भाव में भल ट्रीटमेंट देई हबो सी आम समस्त एक बड़ चैलेंज विषय वस्तु हम तेणुक आगामी दिन में केवल सरकार नुह प्राइवेट सेक्टर जो बंधु मैंने भी हेल्थ सेक्टर रे काम कर समस्त ये बाबद रे अत्यंत गभीर भाव में चिंता करिवार एक अवकाश आज सृष्टि होची आज गोटे कथा होची ए सबु बाबद रे सरकार तांकर चिंता प्रक्रिया आरंभ करिसंती आज 12टी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओडिशा रे अछि एवं आमे 2टी मेडिकल कॉलेज खूब शीघ्र एबे लोकार्पण होबा को जाउची आमे जा योजना अछि ओडिशा रे जो डाक्तर अभाव कथा लंबा समय धरिकी ओडिशा प्रदेश रे गोटे बड़ चर्चित विषय होगी थिला ताकू आखि आगे रखिकी आमे पाखापाखि 30टी जिल्ला रे प्रतिटी जिल्ला रे गोटे गोटे मेडिकल कॉलेज रो जो परिकल्पना ताकू सरकार आरंभ करचंदी एवं बहुत शीघ्र से कथा संपूर्ण भी हबो आगामी दिन रे ओडिशा प्रदेश रे
रोगी को चिकित्सा करुवा डाक्तर मानकर कमी न हो, मेडिकल साइंस रे रिसर्च आगु को जाऊ, स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मानकर भी एठी कमी न हो, ये प्रक्रिया को राज्य सरकार संपूर्ण रूपे आपणैबा आरंभ करचंते एवं आगु को से कथा नहीं कि जिबे। आमे विकसित ओडिशा कथा जेतेबेले कहूचे, मनीषर आवश्यकता, मनीषर बंचिबार आवश्यकता पई, मनीषर बंचिबार अधिकार पई ये गोटे प्रमुख दिग जो कथा को सरकार अत्यंत गुरुत्वर सहित नहीं एवं प्रथम दिन से दिगरे काम आरंभ होइछि। मु आशा करी बहुत शीघ्र आमे जो लक्ष्य नहीं कि चलुचु, पेशेंट आउ डॉक्टर रेशियो को यथारीति आनिबा पई जो लक्ष्य नहीं कि ओडिशा प्रदेश रे सरकार आरंभ करचंती काम, ताकू आमे निश्चित भाव में सफलतार सहित आगामी दिन में करिपारिबु ए विश्वास मोर भी अच्छी एवं मु भाबुची ओडिशार समस्तंकर भी से विश्वास रहिबो। द्वितीय कथा होची, आर्थिक क्षमता नथिबा लोकमानंकर तांकर किभली भाव में ठीक ट्रीटमेंट हबो, जो योजना गुड़ी को आमे आरंभ करिया को जाउचु, राज्य सरकार निजस्व गोपबंधु जन आरोग्य योजना बहुत शीघ्र पाखापाखि आमे आशा करूचु, जेतेबेले जो जातीय खाद्य सुरक्षा आईन रो जो मानकर अंतर्भुक्त अछंती बेनिफिशियरी से मानकर केवाईसी प्रक्रिया चली से सरिला परे परे मते लागुची आमे प्राय ए चलित आर्थिक वर्ष शेष सुद्धा आमे गोपबंधु जन आरोग्य योजना रो इम्प्लीमेंटेशन करिवार प्रक्रिया आरंभ कर दो। एवं सबुठु बड़ कथा होची, ता सहित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जोटा लंबा समय ओडिशा प्रदेश रो दाबी थिला, गरीब लोक मानकर दाबी थिला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत रो जो सुविधा पाइबा पई गरीब लोक माने से कथार प्रक्रिया भी ओडिशा प्रदेश आरंभ करने को जाउछि। मोर आपण मानक आगे कहिबार थिला एतिकी, ये भली जो कनक्लेव जो भली भाव अर्गस टीवी आज ऑर्गेनाइज करिछि, एठी आपण 3-4 पर्याय रे विभिन्न विषय उपर भी चर्चा आलोचना हबो। जेतेबेले विषयर चर्चा आलोचना हबो सेतेबेले हेल्थ सर्विस को नहीं कि विभिन्न प्रकार इनोवेशन, मेडिकल साइंस रो रिसर्च एंड अदर एक्टिविटी तो अन्य माने करूचंती, किंतु हेल्थ सर्विस को जो माने देखुचंती, जो माने परखुचंती, जो माने सेतिरे संपृक्त अछंती, हेल्थ सर्विस को ओडिशार आउ केते अधिक इनोवेटिव करी हबो से बाबद रे थरे चर्चा आलोचना भी ए सेशन गुड़िकर हो। एवं सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती आपणकर जे कोनोसी इनोवेटिव तथ्य सामना को आसीबो ता सीधा सड़क आपण मानकठु आसू कि अर्गस टीवी माध्यम रे आसू, ताकू ग्रहण करिबा एवं ओडिशा को एक बेस्ट सॉर्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस रो हेल्थ सर्विस दबा लोकंकु सेतिपई सरकार संपूर्ण रूपे प्रस्तुत अछंती। आपणकर जो मतामत, आपणकर जो अभिमत आसीबो ताकू सरकार संपूर्ण रूपे ग्रहण करने को पूरा प्रस्तुत अछंती। मोर शेष कथा आपण मानकु जे जो हेल्थ डेस्टिनेशन रो कथा मिस्टर खन्ना किछ समय पूर्व कहूथिले, हेल्थ डेस्टिनेशन ओडिशा हेई पारिबो। बेले बेले बॉम्बे हैदराबाद को देखिले हमको ईर्षान्वित लगे। बॉम्बे पर आज यदि सेकेंड बेस्ट हेल्थ डेस्टिनेशन अच्छी दैट इज हैदराबाद, बेले बेले देखिले ईर्षान्वित लगे जे आमे कहीं हेई पारुनु। मझिरे गोटे छोटिया उदाहरणटे देवी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी रो चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को थरे मु पचारथिली, डॉक्टर रेड्डी एठी हैदराबाद कौन पई फ्लोरिश करूची हेल्थ सेक्टर रे, व्हाई नॉट अदर प्लेसेस? से कहले द फ्रैंक आंसर इज वी आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो से कारण कौन जदि ताकू हम तर्जमा करवा, हैदराबाद रो जते इंडस्ट्रियल ग्रोथ होईची मोस्टली इट इज आईटी वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो थरी गोटे ह्यूज ह्यूमन कैपिटल रो इन्वॉल्वमेंट रोच एंड एवरीबॉडी इज हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस।
सो हॉस्पिटल रो सस्टेनेंस हॉस्पिटल रो तार फाइनेंशियल ग्रोथ फिस्कल ग्रोथ को संपूर्ण रूपे हेल्थ इंश्योरेंस तार सपोर्टिव भूमिका रे ठिया होछि हेतु ओडिशा रे जो सही दृष्टिकोण रो जेतेबेले हेल्थ डेस्टिनेशन कथा आम योजना करूचे गोटे प्रमुख कथा होछि जे आमको गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ रो प्लान करिया को पड़िबो एयर कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी टू आरंभ करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ रो गोटे इनक्लूसिव ग्रोथ पूरा जदि आम योजना करूचे निश्चित भाव में आगामी 5 वर्ष पूर्व ओडिशा को आम एक हेल्थ डेस्टिनेशन भुवनेश्वर को एक हेल्थ डेस्टिनेशन आम ठिया कर एवं ए लक्ष्य को लेकिन आगु को सरकार से अनुजाई तार प्रकल्प प्रक्रिया आरंभ करिसंती योजना आरंभ करिसंती एवं मु आशा करुच्ची जो लक्ष्य आज ओडिशार जो स्वप्न अच्छी ओडिशा हेल्थ सर्विस सेक्टर रे भी एक्सेल करू एवं आगामी दिन रे गोटे हेल्थ सेक्टर रो डेस्टिनेशन हो एटा से बाबद भी मु भावुची आम सफलतार सहित से माइलस्टोन को क्लियर करि परिबा एतिरे कर भूमिका अच्छी जो माने सरकार रे अच्छु जो माने प्राइवेट सेक्टर रे काम करचंती हेल्थ सेक्टर रिलेटेड एरिया रे काम करचंती एवं विशेष करके अर्गस टीवी भलिया जो मीडिया जो माने विशेष करके रुचिपूर्ण भाव में ए कथा को लोकों आगे प्रदर्शित करुचंती आम समस्तंकर मिलित उद्यम रे मु भावुची निश्चित भाव में आमे एई लक्ष्य ये स्वप्न आकु साकार करिवारे सफल हवा एवं आगामी दिन रे ओडिशा हेल्थ सर्विस सेक्टर रे कहंतु किंबा मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र रे कहंतु आमे सर्वभारतीय स्तर रे 1 नंबर रे पहुंचीबा ए आशा विश्वास मोर अछि भगवान कर आशीर्वाद थिले निश्चित भाव में आमे एतरे सफल हवा एवं शेषे मु जो भाई भौणी दिजण गत साइक्लोन समय रे तांकर असीम साहस और धैर्य देखैचंती तांकु व्यक्तिगत भाव में मोर अभिनंदन जणै मो वक्तव्य शेष करुच्ची वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर प्रशंसा शब्द अर्गस ये प्रयास पाई आपन को आउ गोटे कथा सर कहवा को चाहिए आपन को दृष्टि आकर्षण करिया को चाहिए सर हेल्थ कनेक्ट रो सेकंड सीजन रे आमे इक्वली एम्फसाइज करिथिलो इंश्योरेंस ऊपर केमती हेल्थ को आमे कनेक्ट कर इंश्योरेंस ग्रो करेबा जहाँ निश्चित भाव में ओडिशा रे जनसाधारण को आवश्यकता रही एवं ए प्रयास जरिया रे आमे अन्य मानक भली जे केवल दक्ष चिकित्सक मानक ये संवर्धित करू ताहा नुहे सर स्वास्थ्य क्षेत्र में तृणमूल स्तर में जो माने अवदान करुछंती समाज प्रति तांको मध्य ये मंच रे आनी सम्मानित करबा हमर परंपरा रही जहाँ को आमे अंगीकारबद्ध कि आगो को मध्य नहीं कि जीवो गोटे जोरदार करताली निश्चित भाव में अर्गस रे सुंदर प्रयास पाई एवं सारकर सुचिंतित मतामत पाई वर्तमान समय हो जाइए जमती आम कथा होलु सम्मान कथा किसी खास सम्मान आज कार्यक्रम रे शिक्षा अनुसंधान प्रेजेंट्स अर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 रो किसी खास पुरस्कार वर्तमान आपण समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिया को चाहिए सर्वप्रथम कैटेगरी जहाँ होची जनप्रिय चिकित्सक पुरस्कार पीपल्स डॉक्टर अवार्ड आपण समस्त को अनुरोध करी स्क्रीन उपर नजर पकेबा। The award goes to the very popular senior resident Sri Jagannath Medical College and Hospital Puri, Dr. Kishore Chandra Das. आपण को आज ये प्रोग्राम रे पाई एक कार्यक्रम रे पाई आमे निश्चित भाव में धन्य मने करूछु सर आपण को जो प्रयास रही स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन आनिबा पाई आपण आरंभ करथिले आपण को कार्य एज मेडिकल ऑफिसर एंड वर्तमान आपण पोस्टेड अच्छे सीनियर रेसिडेंट एट श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2021 ରୁ 2024 जाए आपण विभिन्न कार्यक्रम रे एवं विभिन्न प्रकार फोरम रे सम्मानित मध्य हेइछंती टिके जोरदार करताली करबा आज हमर सौभाग्य एई कार्यक्रम रे आमे आपण को पाई निश्चित भाव में धन्य मने करछु अनुरोध करिबे आज कार्यक्रम रो मुख्य अतिथि हमर माननीय मंत्री पूर्त आईन अबकारी विभाग ओडिशा श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय एवं आमर अन्य अतिथि माने योगदान करेंगे अनुरोध करी डॉक्टर किशोर चंद्र दास महोदय को मंच उपर को आसवे जोरदार करताली द्वारा तांकर स्वागत करवा। वृत्ति आ मनीष पणिया गोटे सरल रेखारे रहिले बोधुए देखा मिले एभली दृश्य नवरंगपुर तेंतुली खुंटी
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଉଟିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି ମଣିଷର ବି ଛାତି ବତୁରିଯିବ। କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଭଲ କରେ, ହେଲେ ଜଣେ ମହାନ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ କରେ। ସେମିତି ହିଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଳଥିଆ ନିବାସୀ ଡାକ୍ତର ଦାସ 2010ରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି CHCରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ସେଠାରେ ରହଣିକାଳ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୂପରେଖ। ନିଜ ରୁମ୍ ବଦଳରେ OT ଲେବର ରୁମ୍ ଯାଏ ସବୁଠି କରନ୍ତି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିରୁ ଲୌହ ନିଗୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ବିଦାୟରେ ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି। ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଶୋର। ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ସେବାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ସାଇତି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ହେଲେ ପାଠ ସରିଗଲେ ସେହି ମଣିଷ ପଣିଆର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଜିକାଲି କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କିଶୋର କିନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। So he is indeed a people's doctor. बहुत बहुत धन्यवाद। आपण आपणक कर्म क्षेत्र रे सेवा क्षेत्र रे निजको एमती नियोजित रखि थांतु। आगो को जीवा द्वितीय पुरस्कार टी होची स्वास्थ्य मित्र अवार्ड। महिलाटी चारिकांथ भितरे रहिबा कथा पुरातन जुगरु एक कथा चली आसी किंतु वर्तमान ऑल द वुमेन आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग किंतु जेतेबेले बात्या कथा आसे बा एभली प्रतिकूल परिस्थिति जो समय स्पेसिफिकली महिला माने घर भितर रुहंती आपण के भाबिचंती दाना साइक्लोन जेतेबेले आस्थिला जो रेट रे वर्षा जो रेट रे पवन होतिला सेतेबेले कोनोसी झड़ झंझा को खातिर न करी निज जीवन को बाजी लगई जणे झियो जे जणे वृद्धा नुहंती 4-5 जण लोक नुहंती बहुत जन वयोज्येष्ठ व्यक्ति गर्भवती महिला समस्त को कांधे नहीं हॉस्पिटल रे पहुंचे एभली जड़े स्पेशल अवार्ड जहाँ को आम शिक्षा अनुसंधान प्रेजेंट्स आर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 रा स्वास्थ्य मित्र अवार्ड रे सम्मानित करिबु मिसेस शिवानी मंडल। आसंतु तांको विषय एवी ऊपर नजर पकेबा। सेवार कागजरे समर्पणर स्याहीरे किछि मଣିଷ केबे केबे जीवन और मृत्युर मझी पृष्ठारे लेखन्ति अस्मितार आत्मलिपि और निष्ठार कविता। बारण को बरण करू नथिबा एही मଣିଷ ମାନଙ୍କ पाखरे नियति भी हुए नतमस्तक। दानार दारुण दुख भितरे सारा ओडिशा सेमिति देखिथिला जणे आशाकर्मी को शिवानी मंडल को जे बात्या पूर्वरु सेवा समर्पण और सद्भावना को पिठिरे लाउ करी बात्या आश्रय स्थली आड़कू बोही आनिथिले। कर्तव्यर विजय तिलक पिंधि जे अन्य मानंकु आश्रय और आराम बांटुथिले सही शिवानी मंडल। घर केन्द्रापड़ा राजनगर खासमुंडा गाँव रे बात्या भय भितरे गाँर वृद्धांकु निज पिठिरे लदी शिवानी स्थानांतरित करुथुवार दृश्य देखि सारा देश तांकु सलाम करिथिला। पाखापाखि 9 जनरू अधिक लोकंकु सेदिन एइभଳି भावे बात्या आश्रय स्थली को बोही आनिथिले शिवानी। बात्या छाड़ी जिबा परे पुणी थरे पिठिरे बोही नहीं घरे पहुंचाइथिले। प्रकृतरे शिवानीଙ୍କ भଳି कर्मयोद्धा ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ओडिशा आज सुरक्षित ଆଉ गर्वित। प्रकृतरे ओडिया अस्मितार ध्वजा बहुथुवा ଏହି आशाकर्मी जनक हेउछन्ति सच्चा स्वास्थ्य मित्र। Ladies and gentlemen, don't you think she deserves a standing ovation from all of us? स्वास्थ्य मित्र अवार्ड मिसेस शिवानी मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद। गोटे प्रिफिक्स जिते ना रे लगी जाए से से नार मर्यादा बहुत बढ़ी जाए। जमती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जी आम राज्य संगीत लिखिंट सेमती एबे गोटे ना बहुत ट्रेंड करुच्ची से हूँ साबास मानस।
ସେଇ ଦାନା ବେଳର କଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମୋନୋଟୋନସ୍ ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନ୍ କଥା ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ଆମେ କଥା ହେଉ ସେତେବେଳେ ମୋନୋଟୋନସ୍ ତ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ବା ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନସ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାହସିକତା ନିର୍ଭୀକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସିଏ ନିଜେ କୋଳେଇ ଆଣି ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଏବଂ ସାବାସ ମାନସଙ୍କର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଲ୍ଇଡିରେ ଦେଖିବା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ବର୍ଷୁଥାଏ ହେଲେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ପରି ମେଘ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ କର୍ମ ଆଗରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟକୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥାଏ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଶେଷରେ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନିଶ୍ୱାସ ଭରନ୍ତି ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି କର୍ମଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ନଗରପଡ଼ାର ଏହି ଯୁବକଙ୍କ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ସେଦିନ ସଭିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜନଗର କାଠୁଆଗଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିଶ୍ରୀ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଫଳରେ ମାନସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀଙ୍କ ଘରକୁ ଧାଇଁଥିଲେ ନିଜ କୋଳରେ କୋଳେଇ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମାନସଙ୍କ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧତା ପ୍ରତି ଏଭଳି ସମର୍ପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ମାନସ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ବର୍ଷୁଥାଏ ହେଲେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ପରି शिक्षा अनुसंधान प्रेजेंट्स आर्गस ओडिशा हेल्थ कनेक्ट सीजन 3 स्वास्थ्य मित्र अवार्डी मिस्टर मानस मल्लिक वर्तमान आमर तृतीय पुरस्कार क्षेत्रटी हेउछि हेल्थ लेजेंडरी अवार्ड स्वास्थ्य क्षेत्र रे कीर्तिमान वरिष्ठ व्यक्तित्व पुरस्कार एवं पुरस्कारटी मिलुछि एक जनाशुना ना जे भुवनेश्वर नुहे पूरा ओडिशा रे बहुत प्रसिद्ध वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्रा आसंतु तांको विषय एवं उपरे नजर पकेबा जहां का परामर्श को आधार करी राज्य सरकार बहुत किछि रणनीति करथिले कोविड समय रे सर वी वेलकम यू डॉक्टर नीरज मिश्रा ओडिशा स्वास्थ्य जगत रे जणे जनाशुना ना 41 वर्षरु अधिक समय धरी ओडिशावासी को निरविच्छिन्न भावे सेवा जोगाई आसुछंती नीरज कोरोना काल रे टेलीविजन परदारे नीरज बनी जाइथिले नीतिदिनिया चेहरा तांकर एडवाइस कोरोना रे भीतग्रस्त राज्यवासी पीठी थापुड़ाइबार तरीका सेतेबेले तांकु बेस सुख्याति देथिला राज्य सरकार मध्य नीरजकर अनेक गुड़िए परामर्श को आधार करी कोविड मुकाबिला करथिले जड़े नेफ्रोलोजिस्ट भावे सुनाम अर्जिथिबा डॉक्टर मिश्र एवं भुवनेश्वर एक घरे मेडिकल रे कंसल्टेंट भावे कार्यरत बुर्लारू MBBS पढ़ी नीरज गुलजारीलाल नंदा SD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी भली पूर्वतन प्रधानमंत्री मानक पैनल रे भी काम करिसेंती तेणु ओडिशा स्वास्थ्य क्षेत्र डॉक्टर नीरज मिश्र भली जड़े लिजेंडारी व्यक्ति को पाई गर्वित सर बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभेच्छा जनइबु वर्तमान अनुरोध करी आमर मंचासीन अतिथि मानक निज निज आसन में बस जावाई आज इनाग्रेल सेशन वर्तमान आम ये स्थगित करने को जाऊँ ता पूर्व अनुरोध करी अर्गस न्यूज CEO श्री प्रकाश साहू महोदय को आमर कार्यक्रम अतिथि मानक स्मृति चिन्ह सम्मान देवे सर्वप्रथमे कार्यक्रम मुख्य अतिथि पूर्त आईन अबकारी विभाग मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय अनुरोध करी एक स्मृति चिन्ह सहित
सम्मानित करवा जोरदार करताली मध्य आपणठू आशा करिवो। आजिर कार्यक्रम रे आपणकर बलिष्ठ व्यक्तित्व एवं आपण अभिभाषण निश्चित भाव में आम समस्त को नुआ राह देखी सर ए कौन सन्देह नहीं एवं अनुरोध करी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिव श्रीमती अश्वथी एस ताको सम्मानित करने आम गहन निर्देशिका ICMR RMRC भुवनेश्वर एंड ADG ICMR न्यू दिल्ली डॉक्टर संगमित्रा पति तांको मध्य स्मृति चिन्ह दबा टिके जोरदार करताली। सुंदर कारुकार्यपूर्ण ए सम्मान ढोकन आम उपढोकन कहि परिबा। We also have the valuable addition and gracious presence of CEO PD Hinduja Hospital and Medical Research, Mumbai, Mr. Gautam Khanna. Can we have another token of appreciation to be presented to Sri Gautam Khanna by our CEO Argus News, Mr. Prakash Sahu. We are thankful to our sponsors, presenting sponsors, Shiksha Anusandhan, associate sponsor, Sanam Sanguineous Solutions Private Limited, Manipal Hospital Bhubaneswar, Aswini Group of Hospital. अनुरोध करिबे अतिथि माननको बसे जिबा पई एवं प्रकाशन को अनुरोध करिबे धन्यवाद अभिभाषण रखिबे। Thank you, Munmun. You have already done almost most of my job in thanking most of our guests on the dais and off the dais. Thank you everybody for everything. That was our purpose. Jyoti pai ame a program 3 वर्ष पूर्व तो चैनल आरंभ होला आपण माने जेमती आज ये हेल्थ कनेक्ट कॉन्क्लेव को आसिले ए प्रकार आमे समाज रो अन्यान्य वर्ग को टच करला भलिया आउ 5टा क्षेत्र मध्ये आमे प्रोग्राम ए प्रकार करि आसिचु. We are basically a news channel, sir. My chief editor rightly said that we do disseminate or deliver news or the happening and whatever mishappening and all, but simultaneously, being a social responsible citizen, we have some duties and we have touched some sensitive areas like health, education, tourism, women empowerment. Like this, we are doing this annual events. The purpose for which we had started the program, and I thank you everybody, our purpose is fulfilled. Prati varsa, sir, jemti madam au baharu kichi guest mane ashchandia jemti Mr. Khanna, semti resource person mane pratyek session re baharu Odisha baharu semanakaro particularly Odia lok mane jane bahare achanti semanku ame chesta kru सबो डाकिबा तांकर एक्सपीरियंस अनुभव लोकों पाखे शेयर करवा सब बेले इनफॉरमेशन मिल पारे माने मते तो लगे मु भी एते सब एक्सपोजर पर प्रत्येक सेशन दिन सारा अटेंड कला एते गुड़ाए सब इंटरेस्टिंग इनफॉरमेशन थाए लाइक मैडम अश्वती सेड दैट की sensitizing and awareness, everybody has touched the part. That is the main part we are trying to deliver through our platform, and we are doing that, and we are getting very good response, positive response, and we are being motivated, I mean, by the help of all the participants here, particularly the student community and hospitals and corporates, and also, sir, we are sure, I mean, we are trying to involve the startups also. Every year we get some good health startups, and today also we have, particularly this particular year, insurance sector is very much involved with us. Many insurance leaders, corporate leaders, even government and private, they are here with us. We are trying to touch almost all stakeholders in this sector, and with all your support and cooperation, we'll try to do this and take this forward regularly and try to touch our viewers on a regular basis. Thank you very much again on behalf of Argus. Thank you. We certainly don't want to miss this canon moment, presence of August personalities with us today.
ଗୋଟେ जोरदार करताली पुणी थे आशा करी आमर मानवर अतिथि महोदय मान जो मैंने मंच में अच्छा एवं यही 3 वर्ष भितर अर्गस चैनल हेल्थ कनेक्ट माध्यम रे ओडिशार स्वास्थ्य सेवार एक वैप्लविक परिवर्तन आनी जहाद्वारा स्वास्थ्य सेवार गुणमान एवं समूहर उन्नति प्रेरणा जोगई ए कौन दौड़ा ना पुणी थे हृदय आम समस्त अतिथि मानक धन्यवाद देवाक चाहबू किछि समय विरति पर आम आरंभ करने जाऊँ प्रथम पैनल डिस्कशन टॉपिक टी अछि ओडिशा एज अ डेस्टिनेशन नेक्स्ट फॉर एडवांस्ड हेल्थ केयर। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।